So I welcome all of you, people from programs run by Astika Wellness, okay? Also people from participants from programs run by Medini, which is Garbhadhan and Garbhasansar. And of course, if there are people from Avisa, that is Ashtang Chikitsa, they are also welcome. Okay. So सभी का स्वागत है. पूर्णिमा उत्सव क्या होता है? पूर्णिमा उत्सव is a monthly feature. It happens every month, just like Purnima happens every month. So it's a night where we don't talk of disease. तो यहाँ पर कोई हम वो बात नहीं करेंगे मेरा शुगर लेवल इतना है और मेरा बीपी लेवल इतना है और मेरा TSH इतना है और मेरा यहाँ पे दर्द हो रहा है, मेरा वहाँ पे दर्द हो रहा है. नहीं. Today is when we connect to celebration. पूर्णिमा का मतलब होता है celebration. तो हम काफी समय से ये कर रहे हैं. आई थिंक 1 महीना, 1 साल 5 महीने हो चुके हैं. When we started with Purnima Utsav, it's a regular. So what happens is that Swamiji takes us on a different kind of journey. There's a little discourse, thoda sa baat ki jati hai, and then there is a once in a lifetime process. So you can call it meditation, but it's a kumbhak process जो एक ही बार होता है. ये आज ही की रात को होता है, ऐसे दिन होता है, आपको किसी और दिन नहीं करना होता है. तो जो लोग नए हैं प्लीज उसकी रिकॉर्डिंग मत मांगिएगा बार बार, वो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि जो आज हम करेंगे वो आज ही होना होता है और ये कभी भी रिपीट नहीं होता. इट इज नेवर रिपीटेड. So as we say in all sessions, how do we start? Please sit comfortably, okay, a little straight. ये जल्दबाजी का सेशन नहीं है. So थोड़ा सा जिनको नींद की ज्यादा दिक्कत होगी, उनके लिए थोड़ा सा टफ रहेगा. Okay, because we can't control when the process will start, when will happen. Okay. So what is the topic for today? Somebody asked. Why don't you suggest? What is the topic for today as far as we are concerned? Just जहाँ तक हम जानते हैं, it is celebration. एक celebration का वो है कि जब हम celebration से जुड़ते हैं तो हम सब भूल जाते हैं. शादी में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, शुरू में बोलते हैं अरे मेरा ना ये वाली दवाई लेता हूँ, क्या बोलते हैं, ये लेवल है, वो लेवल है, मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना. फिर आसपास वाले थोड़ा पुश करते हैं, फिर आप देखते हैं अरे यहाँ तो लाइटें बड़ी अच्छी हैं, देयर आर नाइस लाइट्स ओवर देयर, द फूड आल्सो लुक्स गुड, पीपल आर सेलिब्रेटिंग, डांसिंग, इवन रिलेटिव्स हु डोंट टॉक टू ईच अदर, नॉर्मली दे आर टॉकिंग टू ईच अदर. ऐसे ही होता है. एंड देन यू से अरे कोई नहीं यार, कल गोली तो खा ही लेंगे ना, लेट्स हैव दिस फूड, लेट्स एंजॉय दिस फूड. अगर गोली नहीं है तो सबकी लाइफ में एक नया एलिमेंट है, कुंभक तो कर ही लेंगे. और बाद में ग्रुप में पूछ ही लेंगे मेरा शुगर लेवल हाई हो गया, क्या करूं. ओके, बट व्हाट एम आई ट्राइंग टू से, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट जब आप सेलिब्रेशन के साथ जुड़ते हैं, then you just forget that there is a problem also, right? So this is a session for that. So सीधे बैठेंगे. और दूसरा जो अभी भी सीरियस दिख रहे हैं इतने समय बाद भी, थोड़ा सा बिना रीजन के, हम तो डेजिग्नेशन आपको देने वाले नहीं है, बैंक बैलेंस हम दे नहीं सकते हैं आपको, but you can smile without a reason. So on this note, let me hand over the session to him. Purnamashi and a special Purnamashi, Buddha Purnima. So Buddha, Buddhi, Buddhu, ये एक ही लाइन है, कोई नीचे है कोई ऊपर है. So what is Buddha?
What is buddhi? First, let's understand what is buddhi. Buddhi is your idea of the world. देखिए यहाँ पे हम कुछ ऐसे आयाम को ओपन करते हैं विच यू नो बट यू आर नॉट लुकिंग एट. आप जानते हैं उन चीजों को मगर आप उस तरफ देख नहीं रहे. यू आर नॉट लुकिंग देयर. तो व्हाट वी डू इज मेक यू लुक देयर. नाउ योर आइडिया, क्रिएटिंग एन आइडिया इज एन एबिलिटी. एक आइडिया क्रिएट करना भी एक एबिलिटी है. One more thing in this session, actually there is a key, एक कुंजी, एक चाबी आपको दी जाती है. If you get it, it will change your life. If you do not get it, कोई प्रॉब्लम नहीं. आप तो वैसे ही है ना जैसे आप थे. So there is no problem even if you don't get it, but if you get it, it will change your life. So give 10 people a canvas and some colors. 10 लोगों को आप एक कैनवस दे दीजिए, कुछ रंग दे दीजिए और उनको बोलिए कि आप कुछ बनाएं इसके ऊपर. मेक समथिंग. So how many people will make the same thing? Nobody. कोई भी दो एक ही जैसी चीज नहीं बना पाएंगे. Maybe they'll make the same stuff, but they'll not make it in the same way. ठीक है? So what does it mean? Whatever is going on in people are so variable, so different. ये इतना भिन्न है जैसे लोग हैं. You must understand, two people can have the same face. चेहरा दो लोगों का आपको एक जैसा मिल जाएगा मगर वो इंसान नहीं मिलेगा. The person will not be. There is so variation. The possibility of variation in this universe is huge, humongous. Acha, next question. If you put the same scenery in front of 10 people, एक ही सीन आप एक जगह बैठा दीजिए खुले में, and there is a scene in front of them, and tell them to draw. You know, still everybody will draw differently. आप शरीर का कोई एक हिस्सा ले लीजिए, निशानी ले लीजिए. Thumb impression. Everybody has a different thumb impression. If you travel to places, you'll see scenery is changing, topology changing, flora and fauna changing, people changing, everything changing. Even the smell changes. तो ऐसे में forcing one idea to everyone, standardization सबसे मूर्खतापूर्ण चीज नहीं. Putting one standard on everybody, क्या ये सबसे मूर्ख बात नहीं? सबसे the dumbest kind of thing a person can do is this. So when everybody is so different from them, everybody is looking at life from their own lens, their own color. That is why we have chosen certain words
to define internal aspect of life. So we define personality in terms of vasana, smell. Vasana, samskara. What smell you have created. Accordingly, you will go there. So आपके गर्भ में, आपके घर में एक बेबी क्यों आता है? क्योंकि वो स्मेल ढूंढता हुआ आ जाता है, मालूम है आपको? Where will you be born? बहुत आसान है जानना. आप किताबें पढ़ना चाहते हैं ना उसके लिए. You want to read something about where I might be born. कहाँ पैदा होना है मुझे? Just find out what smell you like. And find out the place where that smell is prominent. You will be born there. बहुत आसान है. To draw a map. So now we want to reach to. आज जो कुछ होगा वो बुद्ध के अराउंड होगा, ठीक है? आज जो भी कुछ होगा वो बुद्ध के इर्द गिर्द ही होगा. It also means that your idea about anything is not correct. Because you have your idea about everything. What is the fight in the world? दुनिया में लड़ाई किस बात की? One idea against other idea. सारी लड़ाई ही इस बात की. Reality is single. Reality तो कोई देख ही नहीं रहा. सेम चीज को 1 करोड़ लोग 1 करोड़ तरीके से देख रहे हैं. Now one reality. Let's go one by one. Huh? This is what happened in Buddha's life. Buddha, the name was not Buddha, it was Gautam Siddharth. जब वो बुद्धत्व को प्राप्त हुए तो उन्हें बुद्ध कहे. गौतम बुद्ध. So the first thing is, my idea about life is not a reality. ये एहसास होना बहुत जरूरी है कि आप जो सोच रहे हैं, जिसके बारे में सोच रहे हैं, वो सही नहीं है. Now, the moment you understand this or realize this, एक बार आपको ये realization हो जाए, whatever you are thinking is not right, or whatever you are perceiving rather, आप जैसा जिस चीज को देख रहे हैं वो सही नहीं है. तो थोड़ा तो humbleness आएगा ना. The moment you say, oh, I know, बस लड़ाई शुरू हो जाएगी. You have created an idea and you will certainly fight to protect that idea. तो humbleness लाने के लिए भी, if you really want to get into a little humble, become a little humble, get a little humbleness in your life, you must realize that you don't know. आपको ये समझना पड़ेगा कि आप नहीं जानते. You have just picked up one side of the whole scene. वो एक छोटी सी कहानी बड़ी उपनिषदों में बड़ी बोली जाती है. That story is like there are 4 people, all blind, and they are made to stand around an elephant. Elephant is life or representative of life. तो एक बंदा
पाँव को छूता है तो कहता है लाइफ पाँव जैसा है, एक सूंड को छूता है तो कहता है कि वो ऐसा है, बट एवरी आइडिया इज रॉन्ग. They are not, it is not complete because you will anyway look at one side of life only. You don't have the capacity and capability to look life from every side. आप हाथ को भी पूरा नहीं देख पाते. देखते हैं क्या? पीछे वाला पार्ट देख रहे हैं? Can you see the back side? You can't see the back side. So the ability to look at life is very, very narrow. In that narrow ability, you think you know. अगर कोई ये कहता है कि वो जानता था, इज अ गॉन केस. नहीं. So what happened? For the first time, one blind kid drank milk. दूध पिया उसने. तो दूध पिया तो मीठा लगा. अभी तो आपको मालूम है कि दूध मीठा नहीं होता ना. You know, sugar is sweet. No, milk is sweet. The taste of milk is actually sweet. Because you are eating sugar, you don't know milk is sweet. वो overpower कर जाता है milk के sweetness. Again, दोबारा से, you can't look at and create the right idea about anything. Because everything is overlapping each other. So he liked the taste of milk very much. So he asked the person who gave him the milk, how does this milk look? How does, what is the look? What is the, how does it look? कैसा ये दिखता है दूध? जरा बताएं. So the other person said, white. बिल्कुल सफेद है. So the kid said, I don't know white and blue and black and yellow and red because मैं तो देख ही नहीं पाता. What is white? What is white? So the other person said, ये ना हंस की तरह सफेद होता दूध. क्या कहते हैं? Like a swan. हंस की तरह सफेद होता. तो कहता कैसी बात कर रहे हो? I don't know what is हंस. मुझे क्या मालूम हंस कैसा होता. तो कुछ मुझे बताओ जिससे मुझे पता चले. Tell me something. So he said, उसकी ना गर्दन ऐसे टेढ़ी होती है. The neck is bent. कहता कैसा bent होता? How? So he bends his finger and says, देखो इसको पकड़ के देखो, ऐसा होता है उसका गर्दन. तो वो पकड़ के देखता गर्दन, कहता नाचने लग जाता है, खुश हो जाता. I know how is milk. So how is milk? It is like this. It is like this. हम लोग भी तो यही कर रहे हैं ना. This is our idea about life. So, and we think it is right. So the first thing, your idea will change. Do you have this realization? Whatever your idea of life, it will change and keep changing. याद है आपको बचपन में आपकी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुआ करती थी? आपके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट थी? What was more important in your life in your when you were child, जब बच्चे थे? Then you grew up, बड़े हुए तो suddenly it changed. Yes or no? It changed. Everything about what you used to think it changed. As you grew up, it kept changing. बदलता रहता ना.
बुढ़ापे में आपका आइडिया बिल्कुल ही बदल जाता है। जब आप बच्चे थे तो अपने माँ बाप से कितना रिबेलियस बिहेवियर था ना, you would go against your mother and father. It is not new generation, every generation does that. और 50 साल के होते होते आप अपने माँ बाप जैसे ही बिहेव करने लग जाते हैं। डू यू नो दिस? आप बिल्कुल अपने माँ बाप जैसे बिहेव करने लग जाते हैं द मोमेंट यू ग्रो ओल्ड। एग्जैक्टली। बट स्टिल एवरी टाइम ऑफ लाइफ वी वांट टू होल्ड ऑन टू दैट आइडिया। आइडिया इतना चेंज हो जाता है, उसके बाद भी एक आइडिया को उस समय पकड़ के रखते हैं और उसकी वजह से किसी दूसरे से लड़ते रहते हैं। तो पहली बात तो आपको मालूम ही नहीं कि ये भी चेंज हो जाएगा, जो आप सोच रहे हो वो भी बदल जाएगा। Why are you holding on to things then? So the real question, tell me one thing in your life which will not change. सोल क्या होता है? आपने किसी अंग्रेजी किताब में सोल पढ़ा है? सोल वर्ड का भी कोई मीनिंग नहीं होता। You are creating, that is why what I am saying, you are creating an idea thinking it is right. You are giving, actually you are proving it. Breath will change, obviously. The moment you get into disease, breath changes. सीढ़ी छोड़ो, देखो breath बदलता। It always changes. Samskara changes. Don't think samskara doesn't change. It keeps changing. Oh, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा आता जाता है। Myself, you don't know myself. Who is myself? The changing factor is you. जो आप myself कह रहे हैं, your idea बोल रहा है, I have said that ना, कि बचपन से बुढ़ापे तक बदल गया। प्राण शक्ति पता नहीं, हमने बोला शायद आप इसलिए बोल रहे हो। You don't know प्राण शक्ति। Personality changes, everything changes. There is nothing in life which doesn't change. ज्ञान तो इतना ज्यादा बदलेगा कि आप सोच नहीं सकते। आपका ज्ञान सबसे ज्यादा बदलेगा। The only truth is death. ये कहां से पढ़ लिया आपने? There is nothing called death. Do you know that you will die? The highest untruth is death. Oh, and you are saying you don't know that you will die. आपको कभी एहसास नहीं होता कि आप मरे, तो सबसे झूठी बात तो डेथ। भाई प्रूफ तो करो, जब बोल रहे हैं तो प्रूफ तो करो कि डेथ कैसे सच है। सनराइज एंड सनसेट विल आल्सो चेंज, इट कीप्स चेंजिंग एक्चुअली। अभी क्या चल रहा है? उत्तरायण, फिर दक्षिणायन हो जाएगा। The point of sunrise always change. Look at sun. देखो तो सही, देख भी नहीं रहे। हाँ? सुबह उठ के सन को देखो कहां से होता है। It always changes. Sunrise and sunset, if you say not changing, it will also change. Do you think universe is permanent? No. Sun will get destroyed. खत्म हो जाएगा। No sunrise, no sunset. So बीता कल जैसा कुछ होता नहीं है। It doesn't exist. You are talking about something which doesn't exist. I'm talking about something which exists. बीता हुआ कल जैसा एग्जिस्ट नहीं करता कुछ। इट इज योर आइडिया अबाउट समथिंग। और बीते कल का आइडिया भी आपका चेंज हो जाएगा द मोमेंट यू विल इवॉल्व। देन यू विल रियलाइज व्हाट एवर हैपेंड इन योर पास्ट वाज रेलेवेंट एंड गुड। सो व्हाट आई एम सेइंग, यू विल नेवर गेट टू दैट थिंग व्हिच विल नॉट चेंज। रियलिस्टिकली, सच्चाई में कोशिश, अगर आप चाहते हैं कि ये चीज ना बदले और आप बोलें कि नहीं ये तो नहीं बदलता, एंड यू ट्राई टू प्रूव इट, यू माइट प्रूव इट बट इट विल चेंज देन।
प्रूव भी कर दोगे तो भी बदल जाएगा। तो एक सच्चाई लानी पड़ेगी अपने जीवन में, वन ट्रूथ, बी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ, वन एक एक कम से कम एक चीज अपने जीवन में लेके आते हैं। सो नो, request to do the process first, नहीं मतलब नहीं, show your eligibility first, show your eligibility first। तो आप कह रहे हैं कि मुझे 10 किलो खाना खिला दो, नहीं, कैसे खिलाएंगे, आप खा ही नहीं पाओ। So you'll have to get to that ability and then only it will happen, or anything will happen। Now, if you're not even standing this fact and not even ready to realize that everything will change and it will vanish, तो आप आगे कैसे? I should not even go ahead unless and until you realize this। मुझे तो इसके बाद कुछ बोलना नहीं चाहिए। So this is what Gautam Siddharth realized when he saw, story तो मालूम है ना, सबको बताने की जरूरत नहीं है, saw a dead person, a diseased person, an old person, है ना? So this is something he realized that everything is changing। जब सब कुछ बदल जाएगा, what is the fun of living? दोस्त भी मेरे मर जाएंगे, दुश्मन भी मर जाएंगे, मुझे मारने की भी जरूरत नहीं। Isn't it? Wait for some time, everything will finish off, सब चला जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। नहीं, सब खत्म हो जाएगा। You don't have to kill somebody, just wait। हाँ, ये बात अलग है कि आप उससे पहले जा सकते हो। नहीं, सब कुछ चला जाएगा, थोड़ा दिन वेट करो, सब चला जाएगा। अगर आप केवल देख सके तो आपके आसपास में सब कुछ बदलता जाएगा, मगर आपके whatever you call as family, everybody will go one by one, एक एक करके सब निकल जाएंगे। So you must realize this first, then Gautam Siddharth becomes relevant, otherwise it's a story। चलो जी, सीरियल देखा, फिर उसके बाद बंद किया, खाना खाया, सो गए। What is the fun of it? Someday सीरियल देखने वाला गायब हो जाएगा। एवरीथिंग इज चेंजिंग। आप गेम खेल रहे हो, आप हार जाते हो तो क्या, आप जीत जाते हो तो क्या, दोनों ही खत्म हो जाएंगे आखिर। What will you achieve? Nothing। There is no fun in winning, there is no fun in losing, or no sorrow in losing। सब तो खत्म हो रहा है। Just realize this। Today's whole session is an exploration। प्रोसेस शुरुआत से ही शुरू हो गया, अगर आप उसमें नहीं है तो प्रोसेस में आप फिर नहीं। प्रोसेस तो शुरू से कर दिया मैंने, शुरू। क्या आप इसको रियलाइज कर पा रहे हो? एवरीथिंग इज चेंजिंग। आप जिसको जैसे देखते हैं वो वैसा नहीं है, थोड़े दिनों बाद बदल जाएंगे। Even the personality will change। The person whom you loved will completely change and vanish off। ऐसा लग रहा है जैसे लाइफ रबर की तरह, वो इरेजर, वो घिस जाएगी, खत्म।
So whatever your idea is not right, is changing every second, changing world में आप क्या आइडिया बना रहे हैं कि ये सही है, ये गलत है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए. This is how you should behave. This is how you should do things. And you are pushing the other person also to abide by your idea. अपने आइडिया में ही डालने की कोशिश कर रहे हैं अगले इंसान को. क्यों? अरे उसको आप बदल भी दें मगर आप ही बदल जाएंगे, क्या आपको मालूम है? What is the fun of changing the other person when you will change? What is the fun of living when everything is going to finish? ये बहुत जरूरी है. This is what happened. In Gautam Siddharth's life, this is what happened. He actually realized this. उसकी एक बेबी, एक छोटा बच्चा अभी पैदा हो. He said this baby will die. थोड़े दिन की बात है. My wife will go away, die. I will also die. So whatever I think about my life at this point of time is a farce. ये सबसे बड़ी मूर्खता है जो कि मैं सोचता हूं कि I am Gautam Siddharth and this and that. Creating a personality is the most foolish thing. If everything is changing. So then came this want to know what is this game. And he became so desperate. I don't know, when will I die? If I die after 1 hour, I just have 1 hour to find out what is this game. I don't know. I might die 1 hour later. 1 घंटे के बाद अगर मेरी मृत्यु होती है तो मेरे पास में 1 ही घंटा है ना to find out what is this game going. And he couldn't sleep. और वो सो नहीं पाया. He said, I have to at least get out of my family because this is also a game. So game से निकल के ही शायद मुझे देखने को मिलेगा. Because I love my wife, I love my kid, I love my family. So this is a game I am playing. If I keep playing the game, I would not understand the game. So I have to go away from here. इतना desperation में आधी रात को वो छोड़ के चले गए. आप बोलेंगे अरे कैसा बंदा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दिया. मगर आप देख नहीं रहे कि गौतम सिद्धार्थ के अंदर क्या चल रहा है. You are making an idea about it. According to your idea, this is not right, that is not right. And for 5 years, he wandered and wandered and wandered. With that intensity, I might die anytime. I must know. I must know. मुझे जानना है. पांच साल अनेकों गुरुओं के पास. Whoever said whatever, he did everything. मगर वो desperation खत्म ही नहीं हो रहा था. If you really know, you know that you know. Nobody might know that you know, but you will know that you know. ठीक है ना? So he couldn't get that relief. वो जो रॉकेट के पिछवाड़े में आग लगी थी ना, वो बुझी नहीं. So tell me, अब मुझे बताइए,
whatever you know. Is that right? अच्छा, आप चीजों को देखते हैं या आपके अंदर कोई है जो चीजों को देखता है? आप आंखों से देख रहे हैं या पीछे कोई है जो कि आंखों से देखी चीजों को डिसाइफर कर रहा है, डिकोड कर रहा है? सो बाहर की चीजें बदलती रहती हैं, आप जो है वो भी बदलते रहते हैं. यू ऑल्सो कीप चेंजिंग. Slowly I'll get to the game. I'll tell you the game, and many people might be able to realize it, but थोड़ा साथ में रहना पड़ेगा. So I'll take you to that state of Satipatthana और आनपानसति योग. आज उसको विपासना और विपश्यना के तरीके से भी जानते हैं. So looking at the world, one thing you must realize, that everything is changing. You are also changing. So what you call as I is also changing. वो भी बदल रहा है, क्योंकि आप जो सोचते हैं वो बदल जाता है. आप जैसे जैसे उम्र में आगे बढ़ते हैं, आप जो सोचते हैं वो बदलता जाता है, आपके इंपॉर्टेंस बदलते जाते हैं. So what you call as I or your personality also changes. So same mango, a child will look at a mango, and you know what? उसके अंदर से उसको खाने की इतनी उत्तेजना होगी, और वही एक उम्र दराज इंसान उस आम को देखेगा, कहेगा यार बहुत खा लिया जिंदगी में, अब तो शुगर है, अब तो इतना अच्छा भी नहीं लगता. सेम मैंगो, सेम पर्सन, टू डिफरेंट टाइम्स इन लाइफ, एंड उसके बारे में आपकी सोच बदल जाती है. हाँ, ये तो रोज ही देखते हैं. अ सनराइज कैन एक्साइट अ किड, बट डजंट एक्साइट यू, isn't it? A young couple being with each other is an excitement. Old couple being with each other, no excitement. All creeping. So you also change. आप भी बदलते जाते हैं. But the fun of this changing world is you can play any game anytime, knowing that it will finish off. जानते हुए कि ये गेम खत्म हो जाएगा, आप खेल. Isn't it? What is the fun of this changing world? You know that it will finish off, so you play. So you have the, and if you get a little capability to play it the way you want, now that is called as life. अगर आपने अंदर थोड़ी क्षमता ले आए कि अपने हिसाब से आप ये गेम खेल सकें, तो आपको इसका बड़ा मजा आएगा. But on the background, in the background, you must remember it's going to finish. ये आपके लिए एक ट्रूथ की तरह होना चाहिए. गर्भाधान पीपल, लेट्स प्ले अ गेम. ऑल द गर्भाधान पीपल, उनको प्रोसेस दे रहा हूं, वो थोड़ा गेम खेले, ठीक है? सो क्या करना है, व्हाट टू डू? आपको whatever you want in your life, and I hope गर्भाधान पीपल want a baby. देखो, ज्यादातर वांट भी जो हमारा है ना, वो भी सच्चा नहीं है. You are influenced by so many things that you want so many things. You get influenced. एक बेबी भी क्यों चाहिए? क्योंकि परिवार का प्रेशर आ रहा है, क्योंकि नहीं होने पे कुछ गलत बोला जाएगा, ठीक है ना?
ऐसे में मुश्किल होगा आपको भी। मैं बता दूं कि इफ यू डोंट वांट समथिंग इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। तो पहला स्टेप है यू मस्ट वांट इट। अगर इच्छा नहीं है तो इच्छा क्रिएट कीजिए। एक और बात बता दूं, मैं वापस वापस बोल रहा हूं, एवरी टाइम आई एम सेइंग उस इच्छा की कोई वैल्यू नहीं है, मगर गेम है, व्हाई नॉट प्ले इट इन द बेस्ट पॉसिबल। ओनली इफ एवरीथिंग इज इम्परमानेंट, परमानेंट नहीं है कोई चीज, देयर इज फन ऑफ प्लेइंग, उस गेम को खेलने का मजा। अगर गेम खत्म ही नहीं हो तो गेम को खेलने का मजा है क्या? है क्या? नहीं। सो ऑल द गर्भाधान पीपल दे डू अ लिटिल प्रोसेस, थोड़ी देर के लिए प्रोसेस कीजिए, थोड़ी देर के लिए प्रोसेस कीजिए। ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, माय पार्टनर इज नॉट इंटरेस्टेड और व्हाटएवर, आप गर्भाधान में पूछें ये सब क्वेश्चन, आपको बताया जाता है कि हाउ टू ट्रैप द अदर पर्सन। देखो एक दूसरे से अभी हम गेम ही खिलवा रहे हैं ना, यू मस्ट नो हाउ टू प्ले द गेम, इजंट इट? यू नो, जब एक लड़की और एक लड़के को एक दूसरे को पसंद करते हैं तो कितने तरीके से एक दूसरे को वो फंसाते हैं ना। So you play game, you know how to play game also, just look at that. So आपको क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट एन इंटेंस डिजायर ऑफ अ चाइल्ड। विदाउट डिजायर नथिंग हैपेंस इन लाइफ। इच्छा बहुत गहरी होनी चाहिए। जैसे गौतम बुद्ध की इच्छा थी कि मुझे जानना है इस लाइफ के बारे में, मेरे पास टाइम नहीं है, एनी टाइम आई कैन डाई। सो इट क्रिएटेड दैट इंटेंसिटी। तो आपको याद है वो छोटे बच्चे होते हैं, बहुत ढीठ होते हैं, नहीं मुझे चाहिए, जमीन में लेट के रोने लग जाएंगे, और फिर आपको देना ही पड़ेगा। सृष्टि ऐसे ही काम करती है, आपको समझो, मैं आपको की दे रहा हूं मैं, समझो। हाँ, आप पढ़ के रोने लग जाओ, माँ बाप को देना ही पड़ेगा। जिसके गर्भ में पैदा हुए आप, वो माँ बाप है ना, सृष्टि तो माँ बाप, उनको तो देना ही पड़ेगा। लेकिन आप इतना ढीठ नहीं बन रहे, आप थोड़ा लीनियंट हो ना। नहीं नहीं चलेगा, इतने में हमको बहुत ठीक है, थोड़ा हो जाए अपने पास में, कमी नहीं हो बस चलेगा। अरे कहा, कितनी बेवकूफी कर रहा। आपको तो जमीन पर लेट के रोना चाहिए, तड़पना चाहिए। Why at subconscious level? At conscious level you do it, you don't know subconscious level. How will you put something in the subconscious level? When you do it, अभी किसी ने बोला प्रैक्टिस करो, और नहीं भी आता तो प्रैक्टिस तो शुरू करो। रोने का प्रैक्टिस, डिमांड तो शुरू करो। लेडीज नो दिस वेरी वेल। उनको कुछ चाहिए और नहीं मिल रहा, दे विल स्टार्ट देयर टैंट्रम्स। तो आपको कुछ चाहिए तो आप ये नौटंकी क्यों नहीं कर रहे? तो पहली बात तो डिजायर लेके आए, नहीं चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो चाहिए। इस ब्रह्मांड ने आपको पैदा किया और ये शक्ति स्वरूपा है, तो मां से भी नहीं मांग सकते। अगर नहीं मान सकते, आपको समझ नहीं आ रहा, तो आपको पहले एक मंत्र तो दे दिया था ना, क्रिएट एन इष्ट, कनेक्ट विद दैट इष्ट, गुरु कनेक्ट करो, डिमांड फ्रॉम। अब पांव पकड़ के डंडे मार के मत मांगना, अपने अंदर मांगना, बिकॉज योर इष्ट और गुरु इज जस्ट अ वोटेक्स, वो खाली जगह है, वहां से डायरेक्ट कनेक्शन जाता है। तो वहां बोलेंगे ना, कान में जाके बोलने की भी जरूरत नहीं, जस्ट इन योर थॉट प्रोसेस। अगर गुरु को बोलेंगे ना तो सीधा का सीधा ब्रह्मांड को जाएगा।
इसीलिए हमने इस देश में बहुत सारे गुरु स्थान क्रिएट किया। गुरु स्थान क्या? टेम्पल। वो गुरु स्थान, देव स्थान, वो वोटेक्स हैं, वे विच हैज अ डायरेक्ट कनेक्शन विथ द यूनिवर्स। वो देयर डिमांड, इतना तो बनाया, बहुत तो तोड़ दिया, मगर फिर भी बच गए कुछ तो डिमांड करो। तो पहले बार डिमांड करो कि यू नीड अ बेबी। गर्भाधान लोगों को बोल रहा हूं, यू वांट अ बेबी, और तड़प आनी चाहिए। फिर क्या करना है आपको? यू क्रिएट अ बेबी। कैसे करना है आपको? तो आपको लंबा खींचना है, सांस खींचनी, नाक से, नॉस्ट्रिल से लंबी सांस खींचनी। कहां खींच रहे हो? सांस कहां जा रही है? इट इज गोइंग टू यू, आपको जा रही है। नाउ दिस ब्रेथ गेट्स डिवाइडेड इनटू पंच तत्व, 5 एलिमेंट्स में ये अंदर जाके बट जाता है। इट बिकम्स अ रॉ मटेरियल। दिस रॉ मटेरियल, थ्रू दिस रॉ मटेरियल, बिकॉज यू हैव अ वांट ऑफ लाइफ, आपकी इच्छा है ना जीने की, उसकी वजह से आप ये शरीर रोज के रोज क्रिएट करते हैं। यू आर डूइंग इट अनकॉन्शियसली, बट यू आर डूइंग इट। ये जो हवा अंदर जा रही है, ये पंच तत्वों में बट रही है, वो रॉ मटेरियल है क्रिएशन के लिए। एंड यू आर क्रिएटिंग एवरी डे, यू आर क्रिएटिंग न्यू सेल्स, टिश्यूज, सो मेनी थिंग्स इन यू। एक बूढ़े इंसान की इच्छा कम हो जाती है ना जीने की, तभी प्रॉब्लम आती है। जीने की इच्छा कम नहीं होगी तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ यू हैव इंटेंसिटी ऑफ लाइफ, जीने की बहुत इच्छा है, तो you will always be healthy. Once again, I am giving you a single key to be healthy. Last time भी दिया था, आज फिर से दे रहा हूं। A single key to be healthy in your life, in terms of your body, in terms of your relationships, in terms of what you do in your life. हेल्थ केवल शरीर का नहीं होगा। पैसा नहीं है तो भी हेल्दी नहीं है, आप ये भी समझ लो। रिलेशंस नहीं है तो भी हेल्दी नहीं है। तो when we say the word vaibhav, it doesn't mean just money. It means everything that you can make out of life. So देखो, ये सब पचड़े में मत पड़िए। सुंदर जी, आपका तो नाम में ही सुंदर है, आप क्यों ये अगली अगली चीजों में जा रहे हो? See what you connect with most, that is your connection, that's it. You can call it guru, ishta, deva, whatever you connect. ये पता लगा, ये थोड़ा टाइम लग सकता है इसमें, you might take a little time. तो गर्भाधान वाले लोगों को लंबा इनहेलेशन करके वो इनहेलेशन को बेबी के फॉर्म में मोल्ड कीजिए। कहां पे? स्वादिष्ठान पे। कॉन्शियसली क्रिएट करो, कॉन्शियसली क्रिएट करो बेबी। कहां पे करना है? स्वादिष्ठान पे। आपको मालूम है स्वादिष्ठान कहां पे? सो जो सांस ले रहे हैं ना, होल्ड इट, मोल्ड इट इनटू अ बेबी। सी द बेबी क्लियरली एट स्वादिष्ठान। डू इट 16 टाइम्स, 16 बार करो, आराम से बैठ के करिए। डोंट टेक अ बैक रेस्ट नहीं लेना, बस 16 टाइम्स करिए गर्भाधान, ओनली फॉर गर्भाधान पीपल। Inhale it, the inhalation, imagine this. If you can't feel it, imagine this. Your inhalation gets divided into 5 elements. You have the raw material, hold your breath and create a baby while you are holding, and see it clearly. ध्यान से उसको देखें। गर्भाधान जिनको नहीं मालूम वो क्यों पूछ रहे हैं? Why you asking you if you don't know? So हम अभी आगे कर रहे हैं ना प्रोसेस, डोंट वरी। So the first thing is you must understand the impermanence of life.
ठीक है? Now this is not what Gautam Buddha is saying. Now play with it. No, no, no. This is what I am saying. So for Gautam Buddha, playing doesn't mean much. He wanted that everybody should dissolve. But his intention was such that it couldn't happen. It is actually against certain law of nature. Magar, he got realized is the greatest thing because he wanted it and he achieved it. तो क्या वो सही है? क्या सबको निर्वाण मिलना चाहिए? नहीं, कोई जरूरी नहीं. This is not how life works. So इसी एक बहस की वजह से Buddhism is not here in India in a very, very prominent state. Because somewhere he took just one direction. Life is multi-directional. He wanted the whole world, he wanted that the whole world gets into nirvana or becomes a nirvana time space, which is not possible and not essential, and of course it is against certain principles of life. But the realization that life is impermanence will help you a lot. It will actually help you to play the game properly. Because game का result का कोई मायने नहीं है, death का कोई मायने नहीं. What you want to achieve doesn't mean much. How you do things means a lot. ठीक है ना? आप क्या कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं, आप कैसे कर रहे हैं उससे बहुत फर्क. So the next step is, if you are looking outside, don't hold on to anything. If you really see the impermanence of things, you will not hold on to things. है ना? आपके साथी के साथ में, whoever is your family, आपके जो साथी हैं, थोड़ा समय ही है ना आपके पास में. There is a little time with that person. Why you are fighting with that person? अरे कोई बात नहीं ना, उसने आपकी बात नहीं मानी, आप भी बात नहीं मानते, क्या फर्क पड़ता है? बट मौका बहुत कम है. हो सकता है कल सुबह आप या वो उनमें से कोई, दोनों में से कोई ना उठे. There is a very little time. संगत तो एंजॉय करो, और अगर संगत को सत्य की तरफ में ले जाते हैं तो सत्संग हो जाएगा. अगर इस संगत से आप सत्य की तरफ जाने की कोशिश करें तो सत्संग हो जाएगा ना. संगत तो एंजॉय करो, भूल जाइए ना, सब कुछ बदल जाता है. नहीं, आपको तो वो 20-22 साल वाली वाइफ चाहिए तब तो मुश्किल है ना? तो आपको तो वही पुरानी चीज चाहिए तब मुश्किल है. अरे पुरानी चीज कभी नहीं मिलने वाली. प्ले द गेम प्रॉपरली. आप जीत जाओगे तो क्या मिल जाएगा आपको, हार जाओगे तो क्या हो जाएगा? The fun is about the game. You know, you must have given some examination in school. स्कूल में कोई ना कोई परीक्षा दी होगी, और ज्यादातर वो जो पढ़ाई कब होती है, 1 महीना पहले होती है ना. सबकी पढ़ाई वैसे ही होती है, 1 महीना पहले सबकी पढ़ाई होती है. बट 1 महीना पहले सर पे डंडा होता है, तलवार लटकी होती है, एंड यू वर्क हार्ड रियली. इट इज नॉट गुड वर्क बट वेरी हार्ड वर्क. आपके एग्जाम खत्म होने पे बेरोजगार हो जाते हो ना. You just don't know what to do now. इतना काम कर लिया, suddenly you don't know what to do. तो एग्जाम में कितने नंबर आए उसके कोई मतलब नहीं है, वो जो काम किया ना आपने, that is life. So if you do activities on toes, कल मर रहे हैं आज कर लीजिए. अगर आपको सच में पता चला 1 month you have
You will not sleep. सोएंगे नहीं आप, जी लेंगे, जी लीजिए, है ना? So you are going towards happiness. Happy होके क्या कर लोगे? So I'm cracking certain तोड़ू कुछ आइडियाज आपके. So लाइफ का ना हमेशा एक साइकिल होता है. आप दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि आप खुश होते हैं. So if you want happiness, you are also saying, I want sadness also. सिक्का है ना, हेड्स और टेल्स, एक तो अपने पास में नहीं रख सकते आप. कैन यू डू इट? यू कैन डू इट. कितना भी कोशिश करो, दूसरा पक्ष तो आ जाएगा आपके पास. दूसरा पक्ष तो आ जाएगा आपके पास में. जब आप कह रहे हैं आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, यू आर ऑल्सो सेइंग आई वॉन्ट टू बी सैड. What is happiness? What is happiness? Or rather, I would change the terminology. Don't try to go towards happiness. Try to go towards a good experience. गुड को भी हटा दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा. इंटेंस एक्सपीरियंस. आपको मालूम है एक क्रिमिनल जो होता है जब वो मर्डर करता है तो उसको खुशी होती है, हैप्पी होता है वो. क्या आपको मालूम है? चाहिए आपको हैप्पीनेस? कैसा हैप्पीनेस? व्हाट हैप्पीनेस यू वांट? हैप्पीनेस इज एक्सप्लॉयटेशन. आप दूसरे को मार के ही जिंदा रहते हैं. दिस इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ. यू ईट समथिंग एंड यू देन बिकम रिमेन अलाइव. डू यू रियली वांट टू कॉल इट हैप्पीनेस? क्योंकि आप खुश होंगे तो कुछ तो है जिसके ऊपर पैर रख के खुश होंगे. कुछ तो है जिसको इग्नोर करके खुश होंगे. हैप्पीनेस क्यों सैड बना लिया आपने अपने जीवन? Who wants happiness? Who has made his life or her life into a sad event? क्यों बनाया? So let's not talk in terms of happiness and sadness. Let's talk in terms of experience. So जब आप चाय पीते हैं तो can you enjoy the tea? Can you enjoy the tea? But there is also a possibility that you may not enjoy it. Whose fault? Your fault. हर चीज को जीवन में आप या तो अच्छे से कर सकते हैं या तो खराब से कर सकते हैं. Every action you can perform in a manner where it gives you a good experience or it can also give you a bad experience, but you do it ultimately. क्या आप बैठने में एंजॉय कर सकते हैं? क्या आप खड़े होके चलने को एंजॉय कर सकते हैं? Have you seen a kid walking and being happy? Why aren't you happy? You are able to walk. Where are you looking at? कहां देख रहे हो हैप्पीनेस? क्या चाहिए? You are looking somewhere else. मुझे ये चाहिए, then I'll be happy. Work towards it. Do the right kind of work. You'll gain it. You'll get it. थोड़ी देर की हैप्पीनेस होगी, फिर भी बता देता हूं. If you get anything, it will be a short-lived happiness. It will not even be happiness. आपको लगेगा क्या? Once again, ध्यान से सुनिए, की है, कुंजी है.
Your life can be a happy event or it can be a very difficult event. Depends on you. Your happiness doesn't depend on objects. It doesn't depend on money. It doesn't depend on clothes. It doesn't depend on food. It doesn't depend on property you own. Your happiness depends on how you are conducting it. You can be happy in a very, very big palace, and you can be sad in a very big palace. You can be happy in a very small house, or you can be sad in the same house. Happiness is not house. Happiness is not palace. Happiness is not vehicle. How you are conducting it. If driving is pleasure, does it have anything to do with what kind of vehicle? Not really. Not really. Not really. So खुश तो आप कहीं भी हो सकते हैं. अब सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप खुश क्यों नहीं है? मुझे ये रीजन बताइए. क्यों टॉर्चर कर रहे हो अपने आप को? Whatever you want, if it takes time, suppose it takes 5 years time, if you work towards it, बिना काम किए नहीं होगा. Suppose you want few lakh or few crore rupees in your bank, it might take 5 years, 10 years. If you work towards it, तब तक क्या आप दुखी रहेंगे और उसके बाद खुश हो जाएंगे आप? तब आप दुनिया को देख नहीं रहे. You are not taking learning from examples from people. क्यों दुखी हैं? How to achieve happiness? I have given you the key. You can be happy in anything. If you are dancing, can you be happy? You can be happy. But if you don't want to dance, the same dance becomes a difficulty. What is the key? What is the key? आप हाँ है या ना है? I'm giving you the key. दोबारा से की दे रहा हूं, समझिए. If you are yes to life, you will enjoy it. If you want to dance, it will give you happiness. If you don't want to dance, the same dance will give you sadness. So you want to live or not? You should want to sleep, you should want to get up, you should want to eat, you should want, yes. It should be yes. Make your life into a yes. Yes, I want it. Your no's make your life miserable. Your yes makes your life happy. So आपको सिर्फ मैं इसीलिए पूछ रहा था, you should look there. Why you are unhappy? Because you are no to life. क्या आप भोजन को एंजॉय कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, लेकिन भूख नहीं लगी है तो? आज तो आप भूख बिना लगे खाएंगे तो कैसे एंजॉय करेंगे? So what is the right way to eat? When you get hungry, wait for a while, you really become hungry, and then eat. You will enjoy the food. क्योंकि वो फिर आपको चाहिए. आपकी इच्छा को बढ़ा दीजिए. ठीक है? इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर. आपकी इच्छा को बढ़ा दीजिए, आप उस तरफ अचीवमेंट की तरफ में जाएंगे, एंड दैट वर्क विल गिव यू हैप्पीनेस. सो इच्छा भी अगर आप पढ़ के क्रिएट कर रहे हैं, यू आर लुकिंग एट सम वीडियो इन द यूट्यूब और गूगल करके इच्छा बना रहे हैं, तो फिर नथिंग कैन बी डन. सो कांट यू बी हैप्पी इफ यू आर वॉकिंग? वॉकिंग इज अ ब्यूटिफुल एक्ट, इजंट इट? तो खुश क्यों नहीं होते जब चल रहे हैं? कैन यू बी हैप्पी इफ यू सिट?
No, 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 no. You can't be happy when you sit unless until you walk a lot. खूब सारा चलिए, फिर बैठने में आनंद जितना आएगा ना आपको पता भी नहीं. तो पहले चलो ना. I'm giving you the key. की दे रहा हूं मैं, आप इस तरीके से ढाल लो अपने लाइफ. So result doesn't give you anything. How you are performing the action only gives you something, whatever you want. क्या कर रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है, कैसे कर रहे हैं यही लाइफ है. What will I gain by doing this doesn't mean anything. आप इसी ढंग से सोचे इससे क्या होगा, बस you don't have an understanding of life. If something is necessary, you do it, but do it well so that you enjoy it. अरे सुबह शाम खाना बनाना पड़ता है, मुझे मालूम है कितना काम है, होता है ना. सुबह शाम रोज ही एक ही कहानी, क्या बनाए. है कि नहीं. आपने क्यों उसको इतना टॉर्चर बना लिया अपने लाइफ में, क्यों टॉर्चर. वो इसीलिए ना क्योंकि एक देखो भूखे को नमक रोटी भी खिलाओ ना बड़ा सवाल आता है. तो पहले भूख तो क्रिएट करो. So for doing everything, you must create the right kind of a base. That is why it is important to create samskara. What is to be done? पहले ये करो उसके बाद भोजन, ऐसे नहीं. जब भूख लगती है तब भोजन, और उसके बाद में क्या खाना है, उसके बाद में जो इच्छा खाओ. Don't make life into a misery. Rather, get your basics right. थोड़ा बेसिक सही कर, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है. So important thing, बहुत important है. When your 16 rounds are finished, गर्भाधान वालों का, when the 16 round is finished, you can stop, you can relax. 16 राउंड के बाद में रिलैक्स कर सकते हैं. So let's go towards the process. Step by step हम process की तरफ में चल रहे हैं. Everything is changing, and it doesn't change in one line. It always changes in circle. So you always think in a straight line. आप सोचते स्ट्रेट लाइन में हैं, और सबसे बड़ा कैच इसका यही है कि जीवन में कुछ भी स्ट्रेट लाइन में नहीं होता. So there is a huge disconnect with how you think and what happens in life. That is why we call this life as samsara. That means cyclical. So life doesn't have a purpose, but you create purpose out of it. Only by creating purpose you can act and you can play the game. The result doesn't mean much. The game means everything. So involvement in life is very important. So either you involve in life is in such a manner that you cease to exist. अगर आप डांस करते हैं तो डांस अगर बच जाए आप खो जाएं. अगर म्यूजिक करते हैं म्यूजिक बच जाए आप खो जाएं. अगर आप सेवा करते हैं सेवा बच जाए आप खो जाएं. अगर भोजन बनाते हैं भोजन बनाना रह जाए आप खो जाएं. अगर आप प्रेम करते हैं प्रेम बच जाए आप खो जाएं. अगर आप ध्यान करते हैं ध्यान बच जाए आप खो जाएं. This is one way to get sync with the reality of life. And this methodology, this path is called as the path of samadhi.
the path of samadhi. The second way is you detach yourself from everything. आप सभी चीजों से अपने आप को हटाते जाएं. This is not me, this is not me, this is not me, this is not me. Ultimately, you drop yourself also, and you'll reach to a state which is called as prajna. और ये दोनों पीछे से एक ही जगह मिलते हैं, समाधि and prajna. It is just the action which is different, right? So there are only two paths to sync with the reality of life. One is samadhi, the other one is prajna. Buddha chose the prajna path, and there are a lot of people who chose prajna path. Maharishi Raman, prajna path. But prajna path is slow unless and until you are ready. If you are ready, then everything is instant. If you are not ready and you want it really fast, then there is no option but samadhi. But if you can work upon yourself slowly, 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 then the path of prajna. It's a slow path, but you also cross milestones, and there are certain assurances within you that yes, I have crossed a milestone. Right? In prajna path, it is always said that for a normal person it will take 12 lifetimes. 12 lifetimes. So that is why in Buddhist monastery they are not very anxious. You know, calm, cool, सोते सो जाते हैं वो ध्यान करते करते. अरे इतनी जल्दी भी क्या है? And they keep catching people. That is why the next life and the next life becomes very, very important. So you have to catch people, get them to the same sangha so that they can continue from there. Right? Buddhism ecosystem, it's very important to find out signs of a person, personality of a person, so that next life can be correlated with those personalities and the person can be brought back. A very beautiful path, very beautiful path. Every path is beautiful. Every path is useful. Every path is important. A very beautiful path. Mild path, but very beautiful path. Samadhi can be ugly. Prajna cannot be ugly. Samadhi can be ugly. Prajna cannot be ugly. Samadhi can be very, very intense, very, very forceful. Samadhi is very smooth. Very smooth. Huh? क्या कहते हैं? Single malt. So, prajna is very smooth. Very beautiful. Something that you can actually protect, debate logically also. बहुत logic मिलेगा उसमें. You can protect that path with your logic. नहीं देखो ऐसा है, ये सही है. And that is why it has an influence on people who are more logical. And that is why Vipassana is something very, very, it has become very prominent in the West. But वो पैकेज कर देते हैं ना दूसरा, वो गधे हैं. फिरंगी जैसा गधा कुछ नहीं मिलेगा आपको.
No, they have changed it, marketed it, packaged into a different product called mindfulness. Mindfulness बना दिया उसको, इतना सुंदर चीज को इतना अगली बना दिया. Right? Two paths, the path of samadhi, the path of prajna. The path of prajna slowly works, but then you have to be perseverant about it. Now let's combine something else into it. Let's make it a little fast. थोड़ा fast करते हैं. Let's see. थोड़ा fast करते हैं इसको. Let's see. So there is an observer in you who observes things. Can you observe your thought?